ओके, प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पे। देखिए यहाँ सिंपल ड्राइंग गिवन है। ओके, देन ये इसका टॉप व्यू यहाँ गिवन है, एंड देन ये इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये गिवन है। ओके, इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें इसके साइड व्यू से बनाना स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 10 रेडियस 20 एंड देन 30। ओके, इससे बनाते हैं और उसके बाद से इसका ये पोर्शन हम ड्रॉ करेंगे। सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पे मैं इसके लिए लेता हूँ राइट साइड व्यू। ओके, देन स्केच और यहाँ पे आप लीजिए राइट साइड व्यू। ठीक है, देन अगेन मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करूंगा सिंपल से यहाँ पे, एंड देन इसको घुमा के दोबारा रखिए तो एक आर्क जनरेट कर देगा। और यू कैन ऑल्सो क्लिक राइट क्लिक एंड देन चूज द आर्क ऑप्शन। ओके, simple. Take power trim and okay, take a smart dimension and specify the radius 10 and 30. Okay, next right click and then extruded boss base. और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे इसकी जो लेंथ गिवन है वो देखिए यहाँ पे 100। ठीक है, तो 100 लेंथ तक आपको इसे बनाना है। 100। ओके, नेक्स्ट। ओके, राइट क्लिक एंड स्केच। ओके, ड्रॉ ए कॉर्नर रेक्टेंगल। Take smart dimensions and specify the dimensions. Okay, and 10 and 10. Okay, and this distance is 20. Okay, next exit from sketch, features and extruded cut up to surface and then select the opposite surface. Okay, next right click. Okay, then select the surface and sketch. Okay, draw the circle. Right click, take smart dimension, specify the diameter 12. ओके, इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, जो सिलेंडर है यहाँ पे, इसका डायमीटर है 12, तो 12 डायमीटर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन अगेन राइट क्लिक, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। ओके, देन ब्लाइंड अप टू सरफेस। ओके, मैं सरफेस तक इसको देता हूँ यहाँ पे, देन ओके। तो आई होप कि क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट द सरफेस एंड स्केच। ओके, कन्वर्ट एंटिटीज एंड convert the entities, take line. Okay, next draw a rough sketch. Okay, and then draw the arc. Okay, take line and draw the arc. Okay, take line and draw your rough sketch. Okay, next, and then draw the arc. Okay, select it and take smart dimensions, specify the radius 20. Okay, next specify the dimension 50. Okay,
and then make it select and specify the relation horizontal. Okay, next specify the distance 50. ठीक है. Next take circle, smart dimensions and specify the diameter 20. Okay, next. Now right click extruded boss face and change the direction blind and change the direction and give the width 10. Okay, and select the selected contour and delete it. Okay, next. So I hope कि clear हुआ हो आपको. ठीक है. Next यहाँ right click and change the color. Okay, so I specify this. Okay, and you can change the plain paper. Okay, next save the model file and save the model. Okay, and then file, make drawing from parts, browse, choose your standard sheet. Okay, then okay, and plot the different views. Now drawing model and do left click on it and preview आप यहाँ से ऑन रखिए. ठीक है, तो जो व्यूज आपको गिवन है उस तरीके से व्यू यहाँ पे दिखाएंगे. ठीक है, तो फ्रंट व्यू एंड देन ये इसका टॉप व्यू. ओके, देन ये साइड व्यू हम यहाँ शो करेंगे और आइसोमेट्रिक व्यू लेंगे शेडेड विथ एज यहाँ पे इसका. देन ओके, राइट क्लिक और इस व्यू को मैं यहाँ रखूंगा. ठीक है, नेक्स्ट एनोटेशन मॉडल एंड इंटायर मॉडल पे आप सेलेक्ट कीजिए एंड जो डायमेंशन आपने दिए हैं वो सारी डायमेंशन यहाँ शो हो जाएंगी. एंड साइडेड जो ओवरलैप हो रही है डायमेंशन आप उसको थोड़ा सेट कीजिए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. ओके, 10 and 20. सो आई होप कि क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट यहाँ से सेव एज पीडीएफ और प्रिंटेड सेव एज, तो यहाँ पे सेव एज टाइप एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ. ओके, एंड देन सेव इट और पीडीएफ जनरेट कर देगा एंड देन प्रिंट इट. तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें. थैंक यू.